seminar. The seminar series is a part of DAS event calendar and is carried out on every Thursday at 2 p.m. Today, the topic of our seminar is scaling of social businesses in Pakistan, challenges and prospects. And it is being presented by Dr. Farida Faisal, Associate Professor, University Institute of Management Sciences. I hope this scientific talk will provide an opportunity to get in-depth knowledge on the topic. After the presentation, there will be a question-answer session where the participants can ask their questions. Over to Dr. Farida Faisal, please. Thank you very much, Dr. Farooq. I am very thankful for this opportunity to speak on this very important issue, and I also welcome all our students and participants who have joined today's session, and I hope that it will be an opportunity to discuss an issue which I believe is the way forward. It is the solution which we are all looking for, because we are very concerned about the state of Pakistan's economy and the fact that so many people are being left behind. That is the major problem. Poverty is our major problem. People, not being able to find their way out of poverty, and students not being able to find jobs. That is a major issue of our times. And I hope that today's discussion will help us to crystallize some of the ideas how we can overcome these problems. Therefore, I have decided to speak on this topic, but I will discuss the various aspects of social businesses today. So let us start right away. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today I will be talking about social businesses. We should understand that when we talk about social business, exactly what is the concept of social businesses, and a few theoretical perspectives which I will try to give as quickly as possible. And then why do we need it? What is the significance of these businesses? I will talk about extensively the social business ecosystem in Pakistan, because I want to make my presentation very specific. Then, of course, I will be discussing success stories of social businesses, because the thing is that there are many challenges that I will discuss, but after success stories, so that we don't get an idea that it is impossible to engage in these activities. But to be realistic, there are a lot of difficulties and problems, and so we will discuss the problems that these startups and social businesses face in scaling up or growing, and then the future prospects, not only the problem, but the prospects and the way forward. तो ये मेरे contents होंगे, तो social businesses के सारे aspects को हम देखेंगे आज, उनको डिस्कस करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करेंगे, सक्सेस स्टोरीज को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. मगर सबसे पहले आई वुड से कि थोड़ा रिफ्लेक्शन करनी चाहिए. देखिए, किसी भी थ्योरी को पढ़ने से पहले हम उसकी एक अगर फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन कर लें किसी एस्पेक्ट का, तो देन हमारी विजन ब्रॉड होती है. और उस फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन के लिए मैं ये कुछ अशार मोहम्मद इकबाल के जो हमारे नेशनल पोएट हैं दोहराना चाहती हूँ. निगाहे बुलंद सुख्न दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रफ्ते सफर मीरे कारवां के लिए. And when we interpret it from a perspective of a business, so it means that जो business leaders हैं, they need to think high and they need to use inspiring words. But most importantly, they need to care. They need to care about things around them, or about people around them. It is not just enriching that is the ultimate objective of business, but to contribute to society and to care for others. That is how a leader goes forward. I think यही idea अल्लामा इकबाल हमें देना चाह रहे हैं कि जां पुरसोज होना बड़ा ज़रूरी है.
یعنی ارادے اگر بلند بھی ہیں تو بھی لوگوں کا خیال کرنا اور ایمپتھیٹک آپ کو ایک ویو رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور دیٹس ایگزیکٹلی اسی چیز کو اگر ہم آپریشنلی ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں تو دیٹ از واٹ اے سوشل بزنس الاؤز یو ٹو ڈو. یہ جو اتنا بڑا ایک آبجیکٹو ہے, ایک لائف گول ہے, وہ اسی طرح اچیو ہو سکتا ہے کہ بزنس صرف بزنس کے لیے نہ ہو بلکہ ایک سوشل کنٹریبیوشن کے لیے بھی ہو. سو دیٹ از وائی we call it a social business. So first of all, what is a social business and why do we need it? دیکھیے سوشل بزنس جو ہے وہ اٹ از ناٹ اے ٹیپیکل بزنس, کیونکہ جو ٹریڈیشنل آئیڈیا ہے اباؤٹ بزنس کہ اٹ از این انٹرپرائز وچ از دیئر ٹو ریپ فائنینشیل ریٹرنس. ٹھیک ہے, بیسیکلی ٹو ارن منی. Businesses are done to earn money. But when we talk about social business, then it is not just the financial returns, but also the social impact, which is critical. So having a commercial approach, and through this commercial approach, reaching certain social objectives. The theory behind it is that human beings are not just rational in the sense that they try to maximize their benefits, in which case it would be just that they are trying to earn money selfishly. There is also an altruistic part of humans, and that altruism and pro-social behavior is as natural as trying to protect your own interests. So, and that is exactly what psychological theories also suggest, that human beings are at the same time trying to protect their personal interests, as well as they have this instinct to help others as well. So the whole idea is how to align these two objectives, that is the social and the financial, which is related to the firm individual. And so therefore the idea of social businesses has been put forward, where there is economic, social, cultural or environmental mission. That is the starting point of a social business, the mission itself, a bigger mission, a higher aim. And the aim is not just to enrich an individual or enrich a group of individuals, but rather to make a social contribution. So how do you do that? See, making a social contribution traditionally is just like giving charity, or in other words, is philanthropy. But social business is not philanthropy. It's not just making a donation. چندہ دینا نہیں ہے بھائی, کیونکہ چندہ آپ نے دیا اور کام وہاں ختم. یعنی ایک دفعہ چندہ دیا اور بس پھر جس کو آپ نے مدد کی ہے, ٹھیک ہے, تھرو فلانتھروپی, تو وہ آپ نے دیا اور بس. یا بزنس جب آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ لیتے ہیں. اب دینا اور لینا جب اس دونوں چیزوں کو آپ اکٹھا کر دیں گے تو دین یو آر بیسیکلی, آپ اپنے مشن سے ریلیٹڈ ایک پروڈکٹ اور سروس کو کنسیپچولائز کریں گے اور اس کو ٹریڈ کریں گے. دیکھیے بزنس ان اٹ سیلف ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے, اسی لیے ہمارے نبی پاک بھی جو تھے ان کا جو ہے وہ ٹریڈ کے ساتھ تعلق تھا. ٹھیک ہے, انیشلی تو ٹریڈ تو ایک بڑی ورتھ وائل ایکٹیویٹی ہے, اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور اس سے لوگوں کی جو نیڈز ہیں وہ فلفل ہوتی. It's just that اس کا پرپس جو ہے وہ ہائر پرپس لوگوں کی خدمت ہی ہونا چاہیے. یعنی مشن زیادہ بڑا ہے, اس کے فائنینشیل ریٹرنس should be alongside the mission itself. یہ نہ ہو کہ فائنینشیل ریٹرنس کو حاصل کرنے میں اور اس کی بھاگ دوڑ میں انسان جو اس کا سوشل امپیکٹ ہے وہ بھول جائے, کیونکہ یہ لانگ ٹرم میں اس قسم کی تھنکنگ جو ہے وہ لوگوں کو اور پلانٹ کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہے. تو یہاں پہ بیسیکلی بات ہم ری انویسٹمنٹ کی کر رہے ہیں, یعنی کہ دینا اور دینے کے بعد اس کو گرو کرنا اور پروڈکٹس اینڈ سروسز بنانا, اس کو ایک مارکیٹیبل پروڈکٹ بنانا, اور اس کے بعد جب وہ فلفل ہو جائے گا تو آپ کی فائنینشیل اور سوشل ویلیو when it coexists, you see, it becomes a circle. It becomes a circle. Value create ہوتی جائے گی اور بڑھتی جائے گی. بات یہ ہے
कि हम बहुत दफा मैनेजमेंट साइंस में ये पढ़ाते हैं, जब हम सिस्टम्स थ्योरी की तरफ देखें तो वहां पे भी यही बात है कि भाई अगर जितनी चीजें, जितने कंपोनेंट्स साइनर्जाइज्ड होंगे, जितने इकट्ठे होंगे, तो इट इज गोइंग टू बी मोर देन द सम ऑफ द पार्ट्स. सो देयरफॉर अगर किसी तरह फाइनेंशियल और सोशल एस्पेक्ट्स को को मर्ज किया जा सके, एक बिजनेस जो कि सोशल एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, दिया जा सके, तो टोटल सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएशन होगी, मच मोर देन बिजनेसेस ऑपरेटिंग सेपरेटली एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग सेपरेटली. अगर इस तरह होगा तो उतनी ज्यादा उसकी आउटपुट नहीं होगी. ज्यादा आउटपुट तब होगी जब दोनों चीजों को अलाइन किया जाए, और इसीलिए द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल बिजनेस हैज बीन पुट फॉरवर्ड. अब बात यह है कि सोशल बिजनेसेस की जरूरत क्यों है बहुत ज्यादा. देखिए, अपने हम तो मार्केट की रियलिटीज को समझते हैं ना. देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट्स. सोशल बिजनेसेस ऑफर वायबल मॉडल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिलीवरी टू बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट्स. ये कौन सी, ये वो वाली बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट्स. देखें, इफ यू थिंक अबाउट अ पिरामिड, व्हाट इज इट? इट इज लाइक अ ट्रायंगल. बॉटम ऑफ द पिरामिड का मतलब है कि जो गरीब हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा है, और वो बिल्कुल नीचे हैं, वो इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड क्लास है, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा है. जो वेल ऑफ और एफ्लुएंट क्लासेस हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे उसमें लोगों का नंबर कम है. तो ये जो गरीब तरीन तबकात भी है, देखिए जरूरियात तो उनकी भी है ना, और इन्होंने अपनी जरूरियात को मार्केट से ही पूरा करना है. सो दे आर गोइंग टू फुलफिल whatever needs there is. Right now that distribution comes through markets. We are a market economy. It is not that the government can provide the needs for everyone. That would be impossible, at least not in the kind of economic structure that we have. So they will also go to market to buy, whatever items they need for their everyday life, food items, clothes, everything. There is going to be a market, and a number of people are going to be there. So these bottom of pyramids markets are very, very important. What happens is that your traditional businesses often do not reach these bottom of the pyramid markets direct, or the products that they come up with and the services that they generate, your traditional businesses, they are not meant for the bottom of the pyramid market. क्योंकि ये market वो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जाहिर है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस कॉन्शियसनेस है, कमोडिटी की इतनी ज्यादा जरूरत होती है कि उस क्वालिटी को उस हिसाब से रेगुलेट करना पड़ता है, जो कि अफोर्डेबिलिटी रेंज के अंदर आ जाए. ठीक है. और कई दफा ऐसे भी है कि बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जिन्होंने इन बॉटम ऑफ द मार्केट को अपने गेन्स के लिए मिस यूज और अब्यूज किया. ऐसे भी होता है, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव फाइनली इन मार्केट्स के अंदर जो लोग इसके क्लाइंट है उसका वेलफेयर नहीं होता. तो दे आर लुकिंग एट देम आल्सो एज एनी अदर any other client, any other customer, but these are customers with special needs. So therefore इस मार्केट स्पेस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रीच करने के लिए सिर्फ एक सोशल बिजनेस ही एक वायबल मॉडल बना सकता है. उसके अलावा एक बात हमें ये भी याद रखनी चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सारी दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की 17 गोल्स की बात कर रही है, एंड देयर इज अ कंसेंसस कि इन गोल्स को मीट होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, targets in terms of conservation of water, air, energy, gender equality. जो ये सारे के सारे टारगेट्स जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आते हैं, इनको रीच करना पॉवर्टी रिडन कंट्रीज जैसे हमारी है उसके लिए काफी मुश्किल नजर आता है. 2030 तक हमने इसको अचीव करना था, लेकिन लगता है ऐसा नहीं है. और खास तौर पे आफ्टर कोरोना इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू अचीव दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, of which are the direction of the whole world. So even at the World Economic Forum in Davos recently, it was admitted that the problems that the global economy is facing, it is unfairly being borne by the poorer countries.
So we have all these problems, and sustainable development goals are seem to be very far off. So social businesses can contribute a long way, because they at the same time, the social businesses can target a number of goals at the same time. And as I was telling you, if multiple goals can be targeted at the same time, that creates synergy in itself. All right. So that would be another reason why you need to adopt social businesses. And finally, अब यहाँ पैसे की भी बात आ जाती है. ठीक है, बिल्कुल हम इस बात को मानते हैं कि सोशल बिजनेस का काम है एक सोशल मिशन को फुलफिल करना, लेकिन पैसा भी है. व्हाई नॉट? इट इज अ बिजनेस वेंचर, इट इज अ प्रॉपर बिजनेस वेंचर. देखिए, यहाँ पे मैंने बात की इन्वेस्टमेंट की. सो नो लॉन्गर थिंकिंग ऑफ a social business which is being run on donations alone. No, rather accessing investment, considering it a business as well, where there can be investment. So this investment orientation is something which really distinguishes social businesses from traditional businesses, or traditional charitable or welfare organizations, which are donation and aid dependent. These businesses are also looking at sources of funding from impact investors, business angels, venture capitalists, and the green investment movement. So this kind of investment, because of the awareness and the keenness of the world to adopt the SDGs, there is a lot of money, green investment available. And we need to attract this investment in Pakistan as well. And to do that, we will have to look at social businesses as an area which can help us to attract this investment. So for all these reasons, it is very important to prioritize social businesses. But so we need to look at the social business ecosystem in Pakistan. And we need to see that if this kind of model has existed and whether it can work, and then who are the main key players into this whole ecosystem, which can make this idea viable and workable, right? So that is why we need to see the ecosystem. Now, let me tell you, by ecosystem, what I mean is that who are the main players, similarly, uh, who are the main players in this system. I would kindly request participants Sorry. to. Yes, sir. Yes, I would request participants to please keep yourself muted, please. Please keep. Thank you very much. जी, शुक्रिया. मेरे ख्याल में वो अनम्यूट हो जाता है, पता भी नहीं चलता. Thank you, sir. I will continue. Thank you. I will continue. So we were saying that specifically, if we zoom in on Pakistan, and go beyond theory and ideals, and look at what actually exists in Pakistan, then we need to look at the ecosystem. Do we have social businesses in Pakistan? The kind that I'm talking about, those which are not aid dependent, actually, which are generating most of their own funds and attracting investment. Do they exist in Pakistan? And if they do, who are the other players who ensure that these businesses will grow and survive and flourish? So we need to look at the entire ecosystem. You see, the idea of social businesses and organizations which have provided social services while having commercial interests as well, it is not new in Pakistan. As a matter of fact, it existed even pre-partition. And so you have microcredit institutions. At that time, we used to have cooperatives, then revenue generating NGOs or community-based organizations. At that time, it was called community-based organizations. They have existed in Pakistan. And an example of that is the Hamdard Group, which was founded in India in 1906, much before partition.
And as you all know that Hakim Saeed was the father of Hamdard Pakistan, and he established it as a waqf, which is basically an Islamic welfare trust in 1953. So, it carried out a number of welfare activities, and they even have hospitals, and they have universities, and और इनके फलाही इदारे भी हैं काफ़ी सारे। बट सवाल यही है कि क्या ये फलाही इदारे जो है ये एज अ कमर्शियल कंपोनेंट है क्या इनका? अब ये है कि कुछ जगह हो भी सकता है, एट टाइम्स यू कैन पुट इट इनटू द सेम डेफिनेशन। बात ये है कि डेफिनेशन तो कोई लीगल डेफिनेशन सोशल बिजनेस की पाकिस्तान में है ही नहीं, ठीक है? देखें, सोशल बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इज नोन बाय मेनी नेम्स। आप सोशल बिजनेस ना कहें, आप इसको सोशल एंटरप्राइज कह लें। अमेरिका में इसको बी कॉर्प कहा जाता है, बेनिफिट कॉरपोरेशन, सस्टेनेबल बिजनेस कह लें। तो आप इसका नाम कोई और भी दे सकते हैं, लेकिन ये आइडिया कि ऐसा एक बिजनेस जो कि बिजनेस भी हो, अपनी कमर्शियल एक्टिविटी का एलिमेंट भी हो, और सोशल एलिमेंट और सोशल प्रोडक्ट भी डिलीवर कर रहा हो, और उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रही हो, ना सिर्फ डोनेशन हो रही हो, ये वाला जो आइडिया है ये अभी काफी पाकिस्तान में नेसेंट है। ये शुरू जो है इस आइडिया ने फाइनेंशियल अर्निंग बेस्ड अप्रोच और you can say investment based approach to social enterprise started 1997. यही social entrepreneurs का एक global network था by the name of Ashoka, which opened its office in Karachi in 1997. और इस प्रोग्राम के जो स्कॉलर्स थे, जो कि चेंज एजेंट्स बने, वो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम था। आज के ज़माने में हम इसको सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन या इंक्यूबेटर या एक्सेलरेटर कहेंगे। एट दैट टाइम इट वाज जस्ट सोशल एंटरप्रेन्योर्स, बट इट वाज वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। और इसने बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने के ये कॉन्सेप्ट लेके आए कि जी जो है वो बिजनेस भी किया जा सकता है जिसका कि एक एक लार्जर सोशल इम्पैक्ट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी अशोका का जो इनिशियल स्कॉलर्स थे, उसमें से एक थी रोशान जफर, जिन्होंने कशफ फाउंडेशन कायम की। फिर यूथ एंगेजमेंट सर्विसेज, अली रजा खान हैं, वेल नोन पर्सन इन दिस फील्ड। फिर एक और है जी अशर हसन, जिन्होंने कोई नया जीवन जो हेल्थ केयर की एक एंटरप्राइज है, और डॉक्टर्स नया जीवन तो खैर अब नहीं है, लेकिन उसका स्पिन ऑफ मौजूद है, यानी उसको फॉलो अप काइंड ऑफ थिंग मौजूद है। तो ये 1997 से अब बाकायदा आप समझ लें कि आगाज हो गया था सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का पाकिस्तान। हाँ, आज तक ये है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को कोई लीगल स्टेटस कब नहीं मिल सका, बट हैविंग सेड दैट हमारे पास इसकी डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती रही हैं। मसला इनफैक्ट यही है। तो आप देखें कि 1997 से ये आइडिया शुरू हो गया था, और एट दैट टाइम ये कुछ सोशल एंटरप्राइजेस दे केम फॉरवर्ड एंड देव बीन क्वाइट सक्सेसफुल, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव सर्वाइव्ड। फिर आपका एक पहला जो इम्पैक्ट फंडर था, इम्पैक्ट इन्वेस्टर था, वो एक्यूमेन फंड था। ये भी यूएस बेस्ड है, लेकिन ये पाकिस्तान में अभी भी काम कर रहा है, और 2002 से कंटिन्यूअसली ये इस किस्म की इन्वेस्टमेंट इनके पास अवेलेबल है, जो कि सोशल बिजनेसेस की जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, मेंटर भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, इनकी एक रेंज ऑफ सर्विसेज मौजूद है। तो सोशल बिजनेसेस पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ वक्त से करते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या बड़ा मसला है कि ये कोई आइडेंटिफाइड सेक्टर है ही नहीं। अभी तक पाकिस्तान में एक आइडेंटिफाइड सेक्टर बना ही नहीं है। और है क्या कि आगे भी मैं एग्जैक्टली ये बात करूंगी कि एज वी स्पीक ये जो भी कोई सोशल बिजनेस होगा, उसने अगर अपने आप को रजिस्टर कराना है, तो वो अपने आप को रजिस्टर कराएगा एज आइदर एन एनजीओ or as a non-profit organization under Section 42. The closest thing to a social business which can be recognized legally is a non-profit organization. But we know the two are not the same, because बात ये है कि
اگر وہ اپنے آپ کو نان پروفٹ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو کسی قسم کے بھی جو فنڈز جنریٹ کریں گے، دیکھیے انویسٹر ہے، ظاہر ہے وہ تو اس کا کچھ نہ کچھ تو ایک فائنینشیل اس کو گین کا فکر ہے. ہم بات تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی وہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو فائنینشیل گین ہو کہ آپ سسٹین بھی کر سکیں اور کچھ حد تک اس میں ایک financial incentive کا element بھی ہو جائے تو there is nothing wrong with it, and that is the entire idea between social businesses کہ profit کو as something averse to social welfare نہیں دیکھنا چاہیے. ان دونوں کی alignment is what is most important. لیکن اس قسم کی کوئی کیٹیگری ہی نہیں ایگزسٹ کرتی پاکستان میں. تو ہم جب بات کرتے ہیں سوشل بزنسز کی اور جب میں یہاں پہ آپ کے ساتھ اس ایکو سسٹم کی بات کروں گی تو یہ یاد رکھیں کہ اس کے اندر کئی دفعہ ایسی فرم ہوتی ہیں جو صرف این جی اوز ہوتی ہیں، ڈونیشنز پہ چل رہی ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گی ایز اے سوشل بزنس. اسی طرح بیسیکلی باٹم آف دا پیرامڈ کا جو مارکیٹ ہے اسے ایکسیس اگر کوئی کمرشل آرگنائزیشن کر رہی ہے، کارپوریٹ کر رہا ہے the way it does، جیسے بہت سارے ملٹی نیشنلز ہیں، آپ کا پروکٹر اینڈ گیمبل ہے، یونیلیور ہے، یہ باٹم آف دا پیرامڈ کو ایکسیس کرتے ہیں تو وہ تو ابھی سوشل بزنس نہیں ہے، لیکن ان کا ایک سوشل بزنس کمپوننٹ ہے. کیونکہ ڈیفینیشن ایگزسٹ نہیں کرتی تو ہمیں نہیں پتا. سو مینی ٹائمس ہم ان کو بھی اس میں انکلوڈ کر لیتے ہیں جہاں پہ بھی اس قسم کی اگر سوشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، جو کہ ٹیکنیکلی غلط ہے، لیکن اب جب موجود ہی نہیں ہے لیجسلیشن تو اس کا کیا کیا جائے. اور آگے جا کے ہم یہ دیکھیں گے کہ لیجسلیشن کا نہ ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے، ون آف دا میجر ہرڈلز. تو اب ایک یہ بھی ہم ایکو سسٹم کو جب اسٹڈی کر رہے ہیں پاکستان میں تو یہ بھی تو دیکھیں نا ہیں کتنی. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس ایک کوئی ڈیفینیشن تو ہے نہیں، تو یوزلی کیا ہے کہ ہم آئیڈیا لگاتے ہیں کہ کتنی این جی اوز ہیں اور کتنی مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں پاکستان میں جو کہ کوئی ایسی پروڈکٹ اور سروس دے رہی ہیں ایجوکیشن یا ہیلتھ یا ریلیٹڈ ٹو کلین انرجی یا ریلیٹڈ ٹو ڈرنکنگ واٹر، تو ہم اس کو وی جسٹ پٹ اٹ ان دس کیٹیگری. اگر اس حساب سے دیکھیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ 2016 میں برٹش کاؤنسل نے جو ہے وہ ایک کام کیا تھا، ایک سروے کمیشن کیا تھا اینڈ آئی ڈرا آن اٹ کوائٹ اے لاٹ، جس میں یہ دیکھا کہ تقریباً دیکھ لیں کہ 4.5 لاکھ کے قریب سوشل بزنسز آپریٹ کر رہے ہوں گے. ایک نہیں بہت سارے، اور ہاں جس کے پراپر نام ہیں جو کہ ہم ویل نون نیمز ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ بھی اٹریکٹ کی ہے، ایسے ظاہر ہے کہ کافی کم ہے. لیکن کیونکہ بہت سارے مائکرو جو ہیں اور اسمال بزنسز جو ہیں وہ انفارمل سیکٹر میں ہوتے ہیں تو ان کی تو کوئی ڈاکیومنٹیشن بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی. سو اٹس جسٹ اے ویری رف ایسٹیمیٹ، بٹ لیٹس سے کہ اٹس اے لارج نمبر. اور پھر برٹش کاؤنسل کے اس سروے میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ یہ نمبر گرو بھی کر رہا ہے، اور خاص طور پہ جو اس کے انفارمل جہاں پہ بزنسز ہیں، چھوٹے بزنسز ہیں جو اتنے انڈر دا ریڈار ہے، اس کا نمبر تو بہت ہی زیادہ گرو کر رہا ہے. اور یہ دوسری بات ایک جو سامنے آئی اس سروے میں وہ یہ کہ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ میں سب سے زیادہ سوشل بزنسز آپریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اصولی طور پہ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ شوڈ بی سم تھنگ وچ شوڈ بی گارنٹی ٹو آل سٹیزن، بٹ we know in developing countries including Pakistan it is a very tall task to provide education and health to all. The population is very large, resources are very meager, governance is weak. پھر آپ کے political crises constantly آتے رہتے ہیں تو حکومتیں خود سے یہ کام نہیں کر سکتی اور یہ اس کام کو فلفل کرتے ہیں سوشل بزنسز، اور پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے. اور جہاں تک وہ والا ایسپیکٹ ہے جیسے کہ فار ایگزامپل انوائرمنٹل ایسپیکٹ ہو گیا، انرجی سے ریلیٹڈ، کلین انرجی سے ریلیٹڈ، کلین ڈرنکنگ واٹر سے ریلیٹڈ، ویسٹ سے ریلیٹڈ، وہ آپ کو کم نظر آتی ہیں. ہاں فائنانس، مائکرو فائنانس سے ریلیٹڈ وہ آپ کو آرگنائزیشنز کم نظر آتی ہیں. زیادہ تر
informal हैं और education और health sectors के साथ related हैं. फिर एक चीज ये और भी सामने आई अबाउट दीज ऑर्गेनाइजेशंस के इसमें विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन सोशल बिजनेसेस पाकिस्तान में काफी कम है, सिर्फ 1/5 जो है वो फीमेल लेड जो है वो बिजनेसेस हैं. लेकिन ऐसी बात नहीं है, हैं और काफी सक्सेसफुल हैं. और एक बात दूसरी के जो फीमेल लेड बिजनेसेस हैं, सोशल बिजनेसेस हैं, जैसे कशफ फाउंडेशन मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, वो ज्यादा फीमेल एम्प्लॉयज रखते हैं. तो यानी कि जितने ज्यादा फीमेल लेड सोशल बिजनेसेस सामने आएंगे, उतनी ज्यादा फीमेल जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका एक मसला हल हो सकता है. जहां तक मेल लेड सोशल बिजनेसेस का ताल्लुक है, तो दे आर जनरली मोर प्रॉफिटेबल. ठीक है, ये उनका जो है वो फायदा है. तो इट्स अ वेरी डायनामिक, ग्रोइंग एंड वाइब्रेंट सेक्टर of Pakistan's economy. Unfortunately, still it is not acknowledged as such. फिर अगर आप देखिए, जो वही मैं आपसे बात कर रही थी, इट्स नॉट अ सेपरेट लीगल कैटेगरी. तो सेक्शन 42 ऑफ SECP सेज के इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. और मैं 2 केस स्टडीज आप साथ डिस्कस करूंगी, एक अखुवत की और एक NCPC की, जो दोनों एक्चुअली दे आर examples, good examples of successful social businesses in Pakistan. But technically they are registered as non-profit organizations, which means that they are not able to retain any of their earnings, or they cannot give away their earnings as dividends. तो therefore ये है कि क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट है, तो therefore नॉन प्रॉफिट जो है यूजुअली फिर वो अलाइन रहता है किसी बड़ी कंपनी के, या तो अलाइन होगा किसी दूसरी मेजर कमर्शियल एक्टिविटी के साथ, या फिर अखुवत का मॉडल काफी ज्यादा एक रेवोल्यूशनरी किस्म का मॉडल है. अदरवाइज तो फिर कोई नहीं रह जाता चॉइस बट के आप नॉन प्रॉफिट को एक सब्सिडरी बना देंगे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि NCPC जो मैं डिस्कस करूंगी आप साथ. वो अटक ग्रुप ऑफ कंपनीज, अटक पेट्रोलियम, अटक हॉस्पिटल, ठीक है ना, रिफाइनरीज, उसकी एक काइंड ऑफ एसोसिएटेड कंपनी. तो अगर ऐसा ना हो और इसको एक लीगल स्टेटस मिले, तो दे कैन ऑपरेट ऑन देयर ओन एज वेल. अभी इसी इकोसिस्टम में वी शुड आल्सो लुक एट सम ऑफ द गवर्नमेंट बॉडीज व्हिच आर देयर एज सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का रोल प्ले किया जा सकता है, वो है सेंटर फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. ये प्लानिंग कमीशन का एक ऑनगोइंग आप समझ लें पार्ट है, जो कि खास तौर पे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट इन पाकिस्तान को उसमें प्लानिंग करेगी. तो बेसिकली ये जो पूरा आइडिया है ऑफ of ensuring कि social entrepreneurship flourishes in Pakistan, ये इसकी प्लानिंग कमीशन के अंदर इसकी कोऑर्डिनेशन की जा सकती है. सो इट इज देयर, और इसको ज्यादा फाल बनाने की जरूरत है. स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक और वेल नोन बॉडी है स्मेडा के नाम से, जो कि यूजुअली कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और मेंटरिंग के लिए और इवन टू सम एक्सटेंट फंडिंग के लिए इन सर्टेन प्लेसेस, एटलीस्ट मार्केट एक्सेस बढ़ाने के लिए स्मॉल और मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेस की मौजूद है. सो डेफिनेटली इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में से कुछ जो है वो सोशल बिजनेसेस भी हैं, तो उनको भी स्मेडा फायदा पहुंचाती है. एंड इट्स बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैज हैड सम सक्सेस. जो 2 सक्सेसफुल पब्लिकली फंडेड एंटिटीज हैं जिन्होंने सोशल बिजनेसेस के लिए सपोर्ट काफी हद तक प्रोवाइड किया है, वो एक तो है पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल और दूसरा है PITB. ये तो सपोर्ट करती हैं सोशल बिजनेसेस को, एंटरप्रेन्योरशिप को इन जनरल एंड सोशल बिजनेसेस एज अ रिजल्ट. कुछ फोकस ज्यादा अगर उनका सोशल बिजनेसेस पे हो तो ये बेहतर रहेगा.
लेकिन नेवरदलेस क्योंकि वो माइक्रो स्मॉल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप और फ्रीलांसिंग को सपोर्ट करती हैं, तो सोशल बिजनेसेस के लिए भी एक सपोर्ट बन जाती है। इसके अलावा इकोसिस्टम में क्योंकि सबसे बड़ा मसला सोशल बिजनेसेस का ये है कि उनके पास ऑपरेट करने के फंड्स एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस पर्पस के लिए माइक्रो फाइनेंस बैंक्स है पाकिस्तान में, जो कि है ही माइक्रो बिजनेसेस के लिए। जाहिर है माइक्रो बिजनेसेस जो है वो अपॉर्चुनिटी बेस्ड से ज्यादा नेसेसिटी बेस्ड आपके छोटे जो आपके दुकानदार हैं या आपके पीपल एट फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस, उनको जिनके पास कोलैटरल्स ना हो, जिनको कमर्शियल बैंक्स लोन्स नहीं देते क्योंकि उनका बिजनेस का स्केल इतना छोटा है कि वो कमर्शियल बैंक से लोन्स नहीं ले सकते, अनबैंक रहते हैं, उनको माइक्रो फाइनेंस बैंक्स टारगेट करते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये माइक्रो फाइनेंस बैंक्स जो है जो कि माइक्रो एंटरप्राइजेस और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए फंड्स देते हैं, फॉर्मल जो है उनकी बैंकिंग नीड्स को पूरा करते हैं थ्रू 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 फॉर्मल मींस। अदरवाइज तो यूजुअली क्या है कि जो ये स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वहाँ पे सेल्फ फंडिंग ही हो रही होती है, फैमिली बिजनेसेस होते हैं, फैमिली के लोग ही उनसे पैसा लेके या वहीं से कर्जा लेके और ये बिजनेस चला रहे होते हैं। या जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, इनफॉर्मल चैनल्स है पैसे हासिल करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो उसके अलावा पहले ऑप्शन नहीं होती थी, लेकिन अब माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं जो क्रिएट ही इसलिए किए गए हैं कि वो माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन्स दें। हैविंग सेड दैट, इनकी भी जो है काफ़ी इनमें मसले हैं और स्टेट बैंक के अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बैंक्स जो हैं वो भी कुछ जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उन तक रीच करना मुश्किल हो जाता है, इनके इनके लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो पुअर के लिए मुश्किल हो जाता है उसको पे करना, तो इनके मॉडल्स को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। खैर ये फिर भी अगर ये प्रोवाइड करते हैं लोन्स टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अलावा, क्योंकि पैसा ही इम्पोर्टेंट है, लोन या जिसके ऊपर बिजनेस करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है वो तो जो गरीब तरीन लोग हैं वो तो उनके तो बैंक अकाउंट्स ही नहीं होते, तो उनके लिए ये जो मोबाइल वॉलेट्स हैं जैसे इजी पैसा और जैज कैश, जो हम टेलीनॉर एंड जैज कंपनीज, फिर आपका ओमनी है यूबीएल का, ये ब्रांचलेस बैंकिंग है जो कि अगेन रेगुलेट हो रही है थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसने काफी ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन की है लोअर इनकम ग्रुप्स की, और एज अ रिजल्ट दे हैव helped in supporting these small businesses and social businesses as well. जो ऐसे जिनके के वेल रिफाइंड किस्म के बिजनेस मॉडल्स हों, जो probably educated youth या educated people run कर रहे हों social businesses, उनको उनके लिए इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लेकिन इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स में भी याद रखें कि एक उसका बिजनेस मॉडल जो है वो वेल रिफाइंड होना चाहिए। अगर एक इन्वेस्टर है तो वो पूछेगा कि जी आप के जो जो हम आपको इन्वेस्टमेंट देने लगे हैं उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, हाउ यू विल इंश्योर दैट इट विल बी used effectively, तो that remains an issue। और ठीक है कि जो educated class है वो तो फिर ये impact investments के लिए अपने business models को refine करके documentary उसको एक एक presentation उसकी बना सकती है, तो जो poorest के लिए तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना इसको access करना। Having said that, ये ecosystem का एक important हिस्सा है, और एक्यूमेन और सीड की ये दो जो है वो इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन यही है, यानी इससे बहुत ज्यादा की जरूरत है, फिलहाल यही है जो कि कुछ अरसे से पाकिस्तान में हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, अ डिकेड और मोर देन अ डिकेड। एक्यूमेन तो खैर 2 डिकेड से है और सीड भी है, और इन्होंने कुछ अच्छे सोशल बिजनेसेस जो हैं वो उनको इनिशिएट किया है और उसकी उसकी स्केलिंग में भी मदद की है। But of course, these are the formal social businesses which are registered as NGOs, as I was telling you.
ایک ریسنٹ ٹرینڈ یہ آیا ہے کہ جی بزنس انکیوبیٹرز اور ایکسلریٹرز ہوں جو کہ یہ سوشل بزنسز کو بھی انیشیٹ کریں اور نرچر کریں اور انکیوبیٹ کریں. اور most of these incubators, they are associated or housed in academic institutions. Like شروع میں جو خاص طور پہ جس کا سوشل فوکس تھا اس کا نام سوشل انوویشن لیب تھا جو لمس میں شروع ہوا تھا. اب بزنس انکیوبیشن سینٹرز ہیں with all ORICs. in fact ہماری یونیورسٹی کے بھی بزنس انکیوبیشن سینٹرز ہیں. ان کا پر سے سوشل بزنسز کا اگر فوکس زیادہ ہو تو that would be a good step in terms of improving the social business ecosystem. But at the moment یہ exist ضرور کرتے ہیں جس کے اندر entrepreneurship اور freelancing وغیرہ سکھائی جاتی ہے. پھر نیشنل انکیوبیشن سینٹرز ہیں جس کے اندر ان پٹ ہے منسٹری آف انڈسٹریز کا اور جیز کا, اور یہ میجر سٹیز میں ہیں پاکستان کے. اور بھی بزنس لیڈ ایکسلریٹرز بھی ہیں. ایک فار ایگزامپل نیسٹ آئیو ہے جو کہ کراچی میں. سو کراچی ہیز اے نمبر آف ایکسلریٹرز which are led by businesses, not just academic institutions and universities. اینڈ فائنلی اس ایکو سسٹم کے اندر برٹش کاؤنسل جس کی کے سروے کا میں نے آپ سے ذکر پہلے بھی کیا تھا جس پہ بہت آئی ہیو کیونکہ یہ جو میری آج کی پریزنٹیشن ہے اٹس آن ڈیسک ریسرچ, تو آئی ہیو ڈرون اپون دی رپورٹس and there are several very good reports published by British Council and DFID. اس کے علاوہ شیل تعمیر بھی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ پاکستان کے اندر جو سوشل بزنس اسپیس ہے اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, ٹریننگ بھی کرواتے ہیں, مینٹرنگ بھی کرتے ہیں اور اسکیلنگ بھی کرتے ہیں, کمپٹیشنز وغیرہ یہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ کرواتی ہیں which helps to start the narrative and think about the narrative on social business. تو یہ سارے وہ ایکٹرز ہیں جو کہ سوشل بزنس ایکو سسٹم کا حصہ ہیں, اور یہی جو فرمز ہیں وہ مل کے اور سمجھ لیں کہ سوشل بزنس کمیونٹی بناتی ہیں پاکستان میں, اور یہ دے آر آل افیکٹڈ اینڈ دے افیکٹ the سوشل بزنس ایکو سسٹم. دیکھیے میں جب آپ کو ایکو سسٹم کے بارے میں بتا رہی ہوں تو میں ساتھ ساتھ آپ کو ذکر کر رہی ہوں کہ کافی مسائل ہیں ہر سٹیج کے اوپر, اور ظاہر ہے کہ ان مسائل کے ساتھ ڈیل کر کے ہی کوئی سوشل بزنس سروائیو کر سکتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سروائیول بیکمز کوائٹ ڈیفیکلٹ, اور خاص طور پہ یہ الائنمنٹ کے جی کمرشلی بھی وائبل رہے اور ایٹ دا سیم ٹائم سوشل امپیکٹ بھی ان کا زیادہ ہو, یہ دونوں چیزیں حاصل کرنا کافی بڑا چیلنج ہے. اور خاص طور پہ ان ایریا جب کہ آپ کو ریکگنیشن ہی نہ مل رہی ہو, ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک مشکل کام ہے. لیکن ان سارے مسائل کو اوور کم کیا ہے, اور ایک اسی لیے جو میں سکسیس سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. پہلی سکسیس سٹوری جو ہے وہ اخوت کی ہے جو کہ ایک ایکس سول سرونٹ آف پاکستان ہے, ڈاکٹر امجد ثاقب, انہوں نے شروع کیا تھا. یہ ایک سمجھ لے ایک خاص قسم کا مائکرو فائنانس ہے which has 5 core principles: interest free micro finance, پھر اس کے بعد یوز آف ریلیجیس اسپیسز, نان ڈسکریمنیشن, spirit of volunteerism and converting borrowers into donors. یہ ایک اسلامک کانسیپٹ آف مواخات پہ بیس کر کیا تھا ڈاکٹر امجد ثاقب نے, ایکس سول سرونٹ جیسے بتایا ہے, اور ساتھ میں یہ انہوں نے ویلفیئر آرگنائزیشنز کے ساتھ رورل سپورٹ پروگرام ہے, ویری ویل نون ویلفیئر پروگرام جس میں کام کیا تھا. لیکن اس کے بعد ان کو یہ آئیڈیا آیا کہ بھائی قرض حسنہ دینا چاہیے, صرف مدد نہیں کرنی چاہیے, not should go beyond philanthropy. اور پھر اس کو بھی انہوں نے فائنلی آپریشنلائز بہت بہترین طریقے سے کیا جب انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ اس کو قرض حسنہ سمجھیں, which means کہ لوگ یہ کوشش کریں جن کو قرض دیا جا رہا ہے کہ بعد میں وہ نہ صرف اس کو ریٹرن کریں, لیکن جو بوروورز ہیں جنہوں نے پہلے پیسہ لیا تھا اور پھر اس پیسے کو لے کے ان کے بزنس رن کیا تھا, وہ خود ڈونرز بنے آگے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی اراؤنڈ
3 मिलियन फैमिलीज को ये लोग इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे चुके हैं। इनका कॉस्ट बहुत कम है इन्होंने अपनी रखी हुई, क्योंकि मैंने बताया ना रिलीजियस प्लेसेस को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और हाई प्रोफाइल ये लोगों को नहीं एंगेज करते। रादर इनका जो स्टाफ भी है वो सारा वो कोशिश करते हैं कि मिडिल और लोअर मिडिल क्लास लोगों का स्टाफ हो, सो दैट उनको जो है हाई सैलरीज ना देनी पड़े, और इसी तरह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो बिल्कुल खर्च नहीं करते, मिनिमम रखा हुआ है। और एज अ रिजल्ट, क्योंकि अपनी कॉस्ट बहुत कम रखी हुई है, तो एफर्ट यही होती है कि जो भी हो वो मस्जिदों में जाके, चर्चेस में जाके एग्रीमेंट्स हो जाएं, जिसके अंदर ये भी है कि अल्लाह देख रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो रिटर्न करने के वो प्रेशर भी बिल्ड हो, और एट द सेम टाइम एक एक स्पिरिचुअल उसका एस्पेक्ट भी आए, तो between the people who are giving and the people who are taking, तो इस सब को एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज की तरह पेश करके, और इन्होंने काफी हद तक जो है वो एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है, और वी शुड बी वेरी प्राउड, बिकॉज अखुवत एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो प्योरली पाकिस्तान में डेवलप हुआ है। नाउ इट हैज it's a registered legal entity in many in countries of the world like USA, UK, Canada, Sweden, और ये अब अपना मॉडल जो है वो नाइजीरिया, युगांडा और अफगानिस्तान में भी रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो ये एक सोशल बिजनेस का इतना कमाल मॉडल है जो कि रियली इट इज एन ऑनर के इट इज अ बिजनेस व्हिच वाज स्टार्टेड इन पाकिस्तान। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है एनसीपीसी, जिसको मैं पर्सनली जानती हूँ, बिकॉज आई एम honorary board of director member of this organization, जो कि अगेन इसी कैटेगरी में फिट इन करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की थी ओके ये ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप की थी वो हुआ था यूनिडो और यूएनडीपी का एक फंड था, फिर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट ने भी दिया था, और एक इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट नॉन प्रॉफिट बनी थी। लेकिन यूजुअली ऐसी जो कंपनीज इंक्यूबेट होती हैं वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद खत्म हो जाती हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। ये कंपनी एसोसिएट हो गई अटक ग्रुप के साथ, और वहीं पे इसकी होस्टिंग भी है, बट ये अटक ग्रुप के ऊपर डिपेंडेंट किसी तरीके से नहीं है। आई गेट टू सी देयर फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, एंड आई कैन टेल यू कि ये एक बड़ी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट वो सारे प्रॉफिट्स जो हैं वो अपने आप को वो री इन्वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। एट द मोमेंट दैट्स द वे इट वर्क्स, क्योंकि उस प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट है, सो उस प्रॉफिट को जो है वो किसी और यूज में नहीं लेके आ सकते, बट दे डू स्पेंड वेरी वेल ऑन देयर एम्प्लॉइज, और वो एक रेंज ऑफ सर्विसेज देती है। और प्लीज अगर आप इन्हें देखें तो ये रेंज ऑफ सर्विसेज सारी वो हैं जो कि रिलेटेड हैं टू क्लीन एनर्जी एंड इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। दीज आर द टू एरियाज जो कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं जो कि प्रोवाइड करती है, उससे अच्छे पैसे अर्न करती है। जो पैसे अर्न होते हैं उनको फिर ये स्पेंड करते हैं, जेनरसली स्पॉन्सर करते हैं यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स पे। हमारी यूनिवर्सिटी के साथ भी इनका एमओयू है जिसमें वो अवेयरनेस रेजिंग करते हैं अक्रॉस पाकिस्तान, एंड hundreds of schools actually in which they go and they do these kind of activities based on the funds that they have generated, जो कि अगेन जनरेट करने का भी तरीका देखें कि जब फंड जनरेट करेंगे आप लेट्स से इंटीग्रेटेड वेस्ट डिस्पोजल में आप की सर्विसेज आप हॉस्पिटल्स को देंगे, और आप सेफली उनके वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर रहे होंगे, दैट इन इटसेल्फ इज अ सोशल सर्विस, राइट? And from that you are taking money, and then again you are putting it back into creating more awareness. So that is the kind of virtuous circle which we say that social businesses should adopt. And so this is an example for you that it can be done in Pakistan. But do remember that the two success stories I have told you, they are an exception rather than rule. They are very, very few. These are the models which need to be as inspiration, but otherwise there are a lot of difficulties to scale up.
Okay, there are a lot of difficulties. Generally, there is low ease of doing business and quality of governance, and that creates hurdles for all commercial activity. So therefore, definitely also for the social businesses. Then do understand that majority of the social businesses, not the ones which really stand out, but majority of the businesses, 90% of them are in the informal economy. They are micro and small enterprises, and these micro and small enterprises are in tension with the rent-seeking large scale industries. This is despite the fact that the government claims that it is small business friendly now, but still there are a lot of bureaucratic hurdles for these small and medium enterprises, a majority of them, as against the larger corporation. And then, of course, as I was saying again, there is an absence of legislative framework, and when you don't recognize even an entire classification of firms, how are you going to give it any kind of protection? So there is no operational standardization, and there are no business rules specific to social businesses, and that is because of absence of legislation regulatory cover. Then I was talking to you about those support organizations. Remember that these support organizations are there, but then there are issues of trust, and then the training that they are imparting. There are many, constantly there's a mismatch between what the training is doing and what the skill gap is. So that remains. So the support organizations also, there are difficulties there. I told you about the challenges in access to finance. They remain there, and particularly like the microfinance banks, they have cumbersome documentation which keeps the small and micro organizations out. The investment, as far as the impact investors are concerned, yes, they are there, but they have a limited, they have little risk appetite. So they don't want to invest in a country like Pakistan where they feel that the investment might not be safe. Moreover, most of the social businesses, they need to have refined business models. That is very difficult to create. So that becomes another hurdle. Operational issues, obviously, in business planning, legal and statutory compliance, retaining of qualified staff. That is what, that creates huge hurdles for the social businesses. And finally, you can say that the social incubators, like the accelerators, like the business incubation centers, they have more focus on just setting up startups and less on the commercialization and sustainability. And similarly, there is limited complementarity between incubators. So even if they are in the larger cities, even then within these the different branches of the incubators, they don't really try to grow the business geographically or integrate it vertically. Each one of them just want to show good numbers, and that is why they concentrate on the initial phases rather than on the scaling up. So finally, I'm going to wrap it up, and I'm going to say how to improve the prospects for social businesses. So first of all, we need to understand that social business sector is there, it is vibrant, and it is there to, it will on its own, even without help even, this sector will grow, right? And that is because there is inflation and economic crunch. And therefore, actually, social business is the only option left for small and micro and medium enterprises. It is more a necessity for them. So it is going to grow. And then again, also, you see, they are these social businesses, even without any kind of support, when it is run by young leaders who have plans of developing new products and giving, out of the box solution, or women who want to increase their role, because mainstream businesses wouldn't employ them, so they go towards this side. Basically, being more empathetic.
they will do it anyways. And then also number of beneficiaries, to those which are run by experienced leaders, the number of beneficiaries keeps growing. As I told you initially also, it's part of the human psyche to try and help others. So therefore, even in the absence of any kind of support, and even despite these hurdles, you have seen these two case studies, that social businesses survive, and they also increase in size. They can create a bigger positive economic impact if problems are resolved, but they are there to stay even without in the absence. And we saw in the case of Akubat. Now let's see what is it that makes Akubat so special, and how this kind of resilience can be built in other organizations. And it is because the Akubat's program is tailored to the bottom of the pyramid sector particularly. They have worked out that it is the local philanthropy and using Islamic finances such as zakat as capital. So that is something which is very unique to our system. Akubat studied that and incorporated it within its own business model, and that is why it has done so well. Of course, it is Dr. Amjad Saqib himself, being such an educated person and with so much vast experience, he was the one who refined its business model, but that was based not on some donors' ideas, but on very indigenous, homegrown ideas. Similarly, the NCPC is an example of showing that even if the international donors are there, their input is very valuable, and it helps an organization to achieve international standards. So not all external donation is bad, and NCPC proves it. But for it to survive as compared to other your organizations which are established as an outcome of certain project, this one got associated with a well-established corporate, and that is why it was able to scale. So this can be replicated whenever an international project wants to have a sustainable organization or tries to scale it up, then it should affiliate it with some kind of a well-established corporate entity. Then now also there needs to be some kind of reform, and that reform in the SCP and CCP, Competition Commission of Pakistan, and Securities and Exchange Commission of Pakistan, which registers the companies and examines their rules. They should, alongside this the all the actors in the ecosystem or the social business community, they need to come up and group together and come up with organizational models and business structures under which state social businesses can improve. And it should start with legal recognition of social business, as I told you. Uh, Definitely, there needs to be reform within the SBP that can go a long way in improving the future prospects of social businesses. So the microfinance, which has provided, still it has, as I told you before, a lot of hurdles. There's a lot of complexity in terms of documentation required that can be facilitated. And, a special revolving fund or a specialized loan for social businesses should be created in various financial institutions under the State Bank of Pakistan. Of course, the Islamic banking is also something which can be helped to improve the loan facilities for social businesses. Infrastructure needs to be provided to enhance the market access, because for these micro institutions, outcome specific and tax-based solutions to help build and grow social businesses, because they do struggle with the tax regimes a lot. So FBR needs to work out on that. And finally, I will go back to Allama Iqbal's insight that a very important component is a transformational leader. So to improve prospects, we need a transformational leader who dreams big, keeps charging up his followers, and has genuine concern for the weak. So that way, they can overcome adversity and go a long way forward, according to Allama's insight. And it is also true, as we saw in the case of Akuvat, we saw in the case of youth engagement services, and we saw in the case of Kashaf, that it is the transformation leader whose big dream and ability to, charge up the followers, and genuine concern
for improving the lot of the week can really help to make the organization survive and scale. So thank you very much. I will end over here. If there are any questions, please let me know. I will be looking forward to your feedback. Thank you. The house is now open for question and answer session. If you have any question, you can ask a question. Madam, it seems there are no questions. So I would like to thank Dr. Faisal for a very informative lecture on the subject. It was really very interesting and informative as well. So I would also like to thank all the participants for sparing time for our today's seminar. And till next week, Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Thank you. Allah Hafiz.